Hello friends, welcome back to Air Travel Sati. Friends, today I'm going to discuss one latest job walk-in interview related video regarding Air India Express cabin crew. So friends, if you're interested to work as a cabin crew in Air India Express, this is for you. So friends, this video is related to the position of trainee cabin crew female in Air India Express at Cochin International Airport. So friends, if you are interested to work as a cabin crew, so please watch this complete video so that you'll have some idea regarding recruitment process and advertisement details and how to apply. All the details you'll get in this video. So friends, before starting this video, I request to all my new viewers to please subscribe this channel or follow if you are watching this from Facebook. So friends, you'll get all the details and regarding salary structure, Air India Express, all the details here. So friends, let's start. So friends, if you want to attend Air India Express walk-in interview process, so please watch this complete video. Air India Express trainee cabin crew reporting date. The reporting date is 28th August 2022. So friends, here we will discuss regarding the interview details, where it will be held. Like it will be held at Cochin, that is in Kerala, and we'll also discuss regarding the job opportunity of Air India Express and career opportunity and salary. All the details will be discussed. So friends, as per Wikipedia, Air India Express is a low-cost airline and it is headquartered in Kochi, Kerala, and it is a subsidiary of Air India Limited, which is now owned by Tata Group. So friends, this airline operates around 33 destinations and it fly from Kojiko, that is it is the hub station or base station, and it flies to Middle East and continental Asia. And friends, it was founded in 2004 at Delhi, and the current CEO is Mr. Alok Singh, and this operate from Calicut International Airport. So friends, we'll discuss regarding the salary details and about job details of Air India Express. So friends, Air India Express employs its employees like on contractual basis, that is it is up to 3 years or 5 years contract term and it can be renewed. And as a fresher cabin crew, you'll get around 3 lakh per year or 25,000 rupees per month. And if you have experience regarding like in aviation industry as a cabin crew, then your salary can go up to 4.8 lakhs if you have 2 to 8 years of experience, and for experienced it is very good job and it can go up to 8.4 lakh. So friends, now I'll discuss regarding the application process or how to apply for this walk-in interview job at Air India Express. And if you're interested, then please kindly watch the complete video so that you will get guidance regarding application process of AI Express. So friends, Air India Express का जो job walk-in interview है, that is for female candidates. So if you want to go for Air India Express, then just go to this website www.airindiaexpress.in and then careers. As a trainee cabin crew में काम करने के लिए जो details दिया गया है, that is walk-in interview for position of trainee cabin crew female at Cochin. So ये जो link है, ये link में आप देख सकते हैं. So they will take trainee female cabin crew. So आपको apply करना पड़ेगा ये link में जाके. So ये लिंक में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा. उसके बाद एक दूसरा वेब पेज लेके जाएगा, तो उसमें उसका जो इंटरव्यू डिटेल्स है, सो उसमें क्या वेन्यू है, क्या डिटेल्स है, सब आपको मिलेगा. सो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, दैट इज़ ऑल डिजिटल फॉर्मेट. सो डिजिटल फॉर्मेट में आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है. सो फ्रेंड्स, द form has been loaded. So you can see walk-in interview for the position of trainee cabin crew female at Cochin. So if you are from Cochin or anywhere from India, so you can go and apply for this post. So this is a very good job opportunity for female cabin crew aspirant. So you can apply and
द जॉब इज़ वेरी गुड। देन पहला जो ये डेट है दैट इज़ 28 August 2022, it is the date of application, last date of application, and holiday in Cochin, that is an IHG hotel। so इसका ये वेन्यू दिया गया है, सो दैट इज़ वेन्यू इन कोची केरला। सो इसका ये वेन्यू आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू है। इधर आपको फ़ोन का जो फ़ोन नंबर है इसमें दिया गया है, यू कैन ऑल्सो नोट दिस, और यू कैन व्यू इन द मैप द एड्रेस ऑफ दिस होटल। सो इसका रजिस्ट्रेशन, वॉक इन रजिस्ट्रेशन है बिटवीन 9 AM to 11 AM। सो फ्रेंड्स, अभी एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। सो इसका एलिजिबिलिटी है एज ऑफ अगस्त 2022। इसका एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। सो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए यू नीड टू बी बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। इसका क्वालिफिकेशन बोल रहा है you need to complete at least higher secondary or 10+2 from a recognized board or an university। so 10+2 is the minimum requirement। और इसका मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट बेयर फुट आपको जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर फीमेल 157.5 सेंटीमीटर। सो ये मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइट आपको चाहिए मिनिमम अप्लाई करने के लिए। इसका वेट रिक्वायरमेंट बोल रहा है proportionate to height, BMI is between 18 to 22। so ये ब्रेसर्स। so friends, ये जो रिक्वायरमेंट है इट नीड टू अवॉइड बाय दिस। सो इसमें कोई विजिबल टैटू, स्कार्स, डेंटल ब्रेसर्स नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बोल रहे हैं गुड कमेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो फ्रेंड्स, आपको हिंदी एंड इंग्लिश में अच्छा नॉलेज या स्पीकिंग एबिलिटी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, applicants must be fully vaccinated। so all the applicants has to be fully vaccinated, that is second dose has to be taken, or if you have taken the third dose or booster dose, that is good। next, applicants must have a valid Indian passport। so friends, as you know that Air India Express operate in international destinations too, apart from some domestic destination। so you need to have a Indian passport to apply for this post। so passport is mandatory। इसका विजन बोल रहा है नियर विजन है N/5 इन अ बेटर आई एंड N/6 इन वर्स्ट आइज। सो ये रिक्वायरमेंट है। एंड बोल रहा है डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। सो ये डिस्टेंस विजन आपको होना पड़ेगा। स्पेक्टिकल्स नॉट अलाउड। सो अगर आप चश्मा पहनते हैं सो दैट इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज अप टू ±2D परमिटेड। सो अगर कॉन्टैक्ट लेंस है दैट इज़ विद इन -+2D is permitted। color vision should be normal on ishara chart। so ishara, as per ishara chart color vision should be normal। so friends, ये वॉक इन इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड है वेस्टर्न फॉर्मल आउटफिट। सो वेस्टर्न फॉर्मल आउटफिट आपको पहन के इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, एक फॉर्मेट दिया गया, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म बिलो टू अप्लाई। सो अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। फर्स्ट बोल रहा है आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ इसमें देना पड़ेगा। सो डेट ऑफ बर्थ इसमें एक आपको लिस्ट मिलेगा। सो वट एवर इज डेट ऑफ बर्थ जस्ट सिलेक्ट हियर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट शुड बी वैलिड देना पड़ेगा, इज मैंडेटरी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी इज ऑल्सो मैंडेटरी। एंड फुल डिटेल्स ऑफ एड्रेस विथ पिन कोड आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो आपको इधर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका हाइट इन सेंटीमीटर्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेट इन केजीस, आपका वेट कितना है वो केजीस में देना पड़ेगा। एंड जो मैंडेटरी, जो मैंने पहले बताया कि पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। सो नेक्स्ट पूछ रहा है डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। सो यू नीड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। सो येस में क्लिक करना पड़ेगा। इन केस नो और यू डोंट हैव, सो you don't have like you have less chance for a selection as a trainee cabin crew in Air India Express Limited। next बोल रहा है if you yes enter the passport number and expiry dates। so अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है so उसका पासपोर्ट नंबर एंड एक्सपायरी डेट आपको देना पड़ेगा। so पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एंड पासपोर्ट नंबर इज मैंडेटरी, यू नीड टू फिल अप। आपका जो 10th स्टैंडर्ड और बोर्ड और इंस्टीट्यूशन का जो ईयर ऑफ पासिंग है वो नेक्स्ट कॉलम में आपको भरना पड़ेगा। 12th नेम
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड ईयर ऑफ पासिंग जो है वो आपको देना पड़ेगा, फ्री देना पड़ेगा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कुछ डिग्री है तो वो देना पड़ेगा आपको। बोल रहे एडिशनल डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज इन फास्ट एड हॉस्पिटलिटी इफ़ एनी, अगर कुछ हॉस्पिटलिटी में है आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेजेस लोन सेपरेट विथ कॉमा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश अदर कोई लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, सो पहले आपको हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा बंगाली और अदर तमिल वट एवर लैंग्वेज यू नो, यू नीड टू पुट दिस। नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इन केस इफ एनी वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका वैक्सीनेशन जो डिटेल्स है, दैट इज़ फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन, आपका ये डेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको इस बॉक्स में क्लिक करके आपको ये डिक्लेरेशन में ये करना है कि अपन क्लिकिंग एंड सबमिट। सो जो ऑल द डिटेल्स मांगा गया है रजिस्ट्रेशन के वक्त, सो ये सेम आपका जो बोल रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इन्फॉर्म द सेम व्हाइल यू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, ये सबमिट होने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। सो रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद ये नंबर आपको नोट करके रखना है एंड व्हाइल यू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू यू नीड टू गिव दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। So friends, this is very important. Everybody should take a printout or snapshot or just note down your registration number, and it should be like asked at the time of walk-in interview. So friends, I hope that ये format में जो बोला गया है, जो details मांगा गया है, आपको समझ में आ चुका है। So friends, if you have any doubt, you can obviously comment. So friends, I hope that whatever the information you have got in this video it will be helpful for you. And friends, also please check the official website of Air India Express Career. You will get all the details, and also you will get the regular updates here. And also please do not forget to subscribe this channel so that in future you will get latest travel related and job updates related video. And friends, you will be getting this regular job updates from time to time, and you can also check my other video related to cabin crew work-in interview in Air India Limited. So friends, if you need further clarifications, then obviously you can comment in this video. So friends, thank you for watching and have a nice day.